Okay, so hello and good afternoon. Welcome to the EduphoreIAS, the live Hindu class. And today, as usual, we are starting first with yesterday's questions. ठीक है, सबसे पहले कल के जो questions आपको दिए गए थे on the basis of our discussion of this Hindu yesterday's, ठीक है, उसको देखेंगे पहले and उसके बाद फिर हम आज के discussion अपनी start करेंगे. ठीक है, so first question. Diksha portal was launched by the Ministry of Human Resource Development in 2017. We did discuss yesterday about the Diksha portal. Second is, it also provides access to NCERT textbooks, lessons following the regular school curriculum. बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट भी ठीक है. MHRD नाउ इट्स ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देन MHRD मिनिस्ट्री स्पेशली. So the question is asking about the incorrect option. Incorrect is both of them are correct, even first and second both statements are correct. Neither one nor two are incorrect. ठीक है, so the answer is D only. Next, the idea of one nation, one election centers around the concept of synchronizing the timing of Lok Sabha and state assembly elections across all states to reduce the frequency of polls throughout the country. You need to comment for 10 marker question in 150 words. ठीक है, so कल हमने एक डिस्कस किया था smaller article and that was related to this. That was related to one nation, one election. सो वन नेशन इलेक्शन आपको पता है कि सितंबर 1 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक कमेटी स्टैब्लिश की थी. वी कॉल्ड इट और पैनल, वी कॉल्ड इट चेयर बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी. ठीक है, इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर और एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ दिस वन नेशन वन इलेक्शन प्लान. ठीक है, सो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन अगेन फॉलोइंग द सेम आंसरिंग स्ट्रक्चर दैट इज IBC रूल, that is intro, body and conclusion. So intro में क्या आएगा? Firstly हमें डिफाइन करना है कि what exactly is the one nation one election. इसको हम कैसे कर सकते हैं? So you can say that the idea of one nation one election centers around the concept of synchronizing the timing of Lok Sabha and state legislative assembly elections across all states to reduce the frequency of polls throughout the country. Fine. This much introduction would be sufficient because the question is for 10 marks and 10 मार्क के लिए 3 लाइन से ज्यादा की इंट्रोडक्शन नहीं लिखनी. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी पार्ट पे. सो बॉडी पार्ट में सबसे पहले आप हिस्टोरिकल नोट पे स्टार्ट कर सकते हो कि यस, फ्रॉम फर्स्ट एवर जनरल इलेक्शन टू लोक सभा एंड असेंबली इन द ईयर 1952 until 1967, fine, means 3 subsequent Lok Sabha elections until 1967 were held simultaneously. ठीक है, एक साथ हुए थे दोनों के इलेक्शंस. उसके बाद 67 तक, उसके बाद फिर क्या हुआ कि because of due to defections and counter defections in between the parties over the time, because initially there was only a single party rule, fine, and over the time जैसे जैसे parties numbers बढ़ने start हुए, regional parties emerge होने start हुई, national level पे parties emerge, so of course we see defections and counter defection between the parties. What happened then? Many of the legislative assemblies were dissolved post 1960, ठीक है, and which eventually led to separate polls for Lok Sabha and state legislative assemblies. So, but currently the assembly polls of the 4 states, remember, 2 from northeast, that is Arunachal and Sikkim, 1 from south, that is Andhra Pradesh, and 1 from, of course, east side, that is Odisha. So these 4 states elections are being held simultaneously with the Lok Sabha election. ठीक है, so 4 ही ऐसे स्टेट्स इंडिया में है जिनके इलेक्शन लोक सभा के साथ आज की डेट में भी होती है. ठीक है, so this should form the body part. After that, what do reports say about one nation one election? तो सबसे पहले आपने मेंशन करना है कि लॉ कमीशन 2018 में क्या कहा. पहले तो ये कहा था कि लॉ कमीशन ने कि simultaneous elections are not feasible within the existing framework of the constitution. It means what? It means we would require to amend our constitution or the provisions of constitution. And वो कौन कौन सी प्रोविजन है, हमें अमेंडमेंट जो है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ जो अमेंडमेंट्स है वो हमें कहाँ पे करनी पड़ सकती है, दैट इज स्टेट असेंबलीज के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं 172 आर्टिकल. ठीक है, सेंटर के लिए 83 क्लॉज 2. देन अपार्ट फ्रॉम दैट कमीशन आल्सो रिकमेंडेड टू रिसीव रेटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट 50% of the state, because these amendments or one nation one election concept or plan is going to
have its impact on the federalism, that is the relation between the central and states, and therefore taking states on board is very much required. ठीक है, इसलिए रेटिफिकेशन की जरूरत है। तो ये लाइंस आप बॉडी पार्ट में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए आप ये भी कह सकते हो कि इवन इन 1999 the then law commission of India headed by, let us say, Jeevan Reddy, Justice Jeevan Reddy also advocated for simultaneous elections. उसके बाद आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस शो कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है इसके, उसमें यह है कि सेविंग ऑफ पब्लिक मनी, ठीक है, रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, अपार्ट फ्रॉम दैट टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस ऑन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। फाइन, सो दीज आर ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। 2-3 पॉइंट्स ऑफ पॉजिटिव दे दो, 2.3 पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स मेंशन कर दो और कंसर्न्स। फॉर एग्जांपल, foremost concern is with regard to its feasibility, possibility है भी कि नहीं, ठीक है, because it will stipulate time for 5 years unless dissolved earlier. So क्या होगा अगर फॉर एग्जांपल 5 साल के बजाय 2 या 3 साल में किसी स्टेट की सरकार गिर जाए, तो फिर क्या सारी स्टेट्स की इलेक्शन करवाएंगे, सेंटर या और साथ में सेंटर की भी, तो वो तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, isn't it? So these are the questions which needs to be addressed actually, fine. So उसके बाद सेकंड जो है कि आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन डज नॉट स्क्वायर विद द कांसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। सो दिस इज अ सेकंड पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट यू कैन मेंशन। थर्ड पॉइंट यू कैन मेंशन, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ recurrent elections can be seen as beneficial in a democracy as it allows voters to have their voices heard more frequently, फाइन, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने से सिर्फ 5 साल में एक बार इलेक्शन होंगे, तो पता नहीं पॉलिटिशियंस आएंगे दोबारा कि नहीं जनता के बीच, ठीक है। सो दिस इज व्हाई दिस recurrent elections is good for a democracy. This is the third point, and finally you can conclude that finally you can conclude in the lines of course, that considering all this, you can quote here as well the law commission statement itself, that this is 2018 report itself, that simultaneous elections are not feasible within the existing framework of the constitution. However, it will be possible if these provisions of the constitution be amended, okay. So that's it, taking states on board, fine. So that's how you can complete your answer for this question. That's it about this question. Let us start with the today's Hindu itself. After that we will see questions from the today's Hindu, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी। ओके, सो चाइनीज प्रेसिडेंट ने ये कहा है, चाइनीज प्रेसिडेंट विल नॉट अटेंड दिल्ली G20 समिट। एंटिसिपेशन कुछ ऐसी ही थी काफी टाइम से। सो यू सी द डे व्हेन चाइना एक्चुअली शोड came up with a map, new map, and showed Arunachal Pradesh and Aksai Chin as a part of China. So therefore उस टाइम से ही इस तरह के कुछ अनुमान लग गए थे। Ready to assess capacity of 13 hill states, government tells SC. तो जो चल रहा है आप हिमाचल उत्तराखंड में जो मैसिव यू कैन से कोलैप्स एंड ऑल देख सकते हो, लैंडस्लाइड्स। तो इसके बाद सेंटर ने एफिडेविट में ये कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि वी आर रेडी टू फॉर्म अ 13 मेंबर टेक्निकल कमेटी टू इवैल्यूएट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 13 हिमालयन स्टेट्स, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब, दैट इज लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हिल टाउन्स एंड सिटीज, ठीक है। द कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन इकोसिस्टम कैन सस्टेन विदाउट गेटिंग डिग्रेडेड, ठीक है। दिस इज व्हाट सेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन एफिडेविट टू SC। उसके बाद मराठा, कल हमने देखा था कि वहाँ पे रिजर्वेशन के लिए OBC कैटेगरी के अंडर मराठास प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए पैनल फॉर्म कर दिया है वहाँ की सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। ओके, के बाद हम इसके बाद नेक्स्ट पेज पे सिटी पेज फ्रॉम दिल्ली, G20 summit except essentials no delivery services in New Delhi, सो प्रॉपर पूरी सिक्योरिटी बरती जा रही है जिसको ध्यान में रखते हुए।
तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्विकली देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स पेज से जनरली यू सी द पॉलिटिक्स ओनली, ठीक है, तो इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ओके आफ्टर दैट कुछ स्टेट्स पेजेस, नेक्स्ट स्टेट से रिलेटेड पेजेस आपके। तो यहाँ भी पॉलिटिक्स, हमें इतनी ज़्यादा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। हाँ कुछ रेलिवेंट है तो ज़रूर उसको देखेंगे, अदरवाइज यू कैन स्किप। Okay, editorial. So front art, on this lead, this editorial page, lead article is a distraction balloon in the winds of federalism, related to one nation, one election idea and all, written by two of the, persons associated with a particular party. So of course you can see the opposition, there are the opposition members, so of course written in, no, in that manner only. So इसमें हम नहीं जाएंगे because more or less politics की इसमें ज़्यादा बातें होंगी, ठीक है। Let us not go into that. What is important in this article? Every emerging countries need women-led climate change or activities. Why so? Emerging countries need women-led action. क्यों? ऐसा क्यों है? So यहाँ पे ये है कि women, especially emerging countries की बात करें, दो फील्ड्स पर्टिकुलरली इन्होंने बात की है, साउथ एशिया, हम भी आते हैं, इंडिया भी साउथ एशिया में आता है, प्लस सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका ज्योग्राफिकली अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो सब सहारन अफ्रीका इज बेसिकली द सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। सहारा डेजर्ट से जो नीचे वाला पार्ट है, जिसमें आपका सदर्न अफ्रीका आ जाता है, ईस्ट अफ्रीका आ जाता है, वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है, ये आपके रीजन्स आ जाते हैं। बिल्कुल सदर्न नीचे वाला पार्ट, द लोअर हाफ पार्ट ऑफ योर बट बिलो सहारन डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ की बात इन्होंने पर्टिकुलरली कोट की है अपने आर्टिकल में। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इमर्जिंग कंट्रीज नीड विमेन लेड क्लाइमेट एक्शन। हाउस होल्ड वर्क्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ विमेन एंड ऑल, तो स्पेशली इन द रूरल एरिया। सो इसलिए कह रहे हैं कि विमेन लेड क्लाइमेट एक्शन होनी चाहिए फॉर इन द इमर्जिंग कंट्रीज। So gender equality and environmental goals are mutually reinforcing and create a virtuous cycle that will help accelerate the achievement of the SDGs, Sustainable Development Goals. ठीक है, it was said by none but OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, ठीक है, कि जेंडर इक्वालिटी जो है एंड एनवायरमेंटल goals are mutually reinforcing and create virtuous cycle that will help in achieving the sustainable development goals by 2030 जो हमारा एजेंडा है। क्यों? The impact of climate change is one that has profound consequences for humans and has emerged as one of the biggest global challenge in the recent decades. The effects of climate change vary according to location, socioeconomic status and gender. ठीक बात है। An International Labour Organization 2019 report said that in 2030, 2.2% of total working hours worldwide will be lost to high temperatures, a productivity loss equivalent to 80 million full-time jobs. तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस ने 2009 में हाईलाइट किया था that across genders, women are considered to be highly vulnerable and disproportionately affected by climate change than men to the impact of climate change. तो देख सकते हो कि ज़्यादातर रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि जेंडर जो है एट द सेंटर है एंड स्पेशली जो विमेन है वो ज़्यादा वनरेबल है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज देन मेन, ठीक है। ओके, सो फेल्ट मोर इन लो इनकम कंट्रीज, ठीक है, जो ये वनरेबिलिटी है, जो क्लाइमेट रिलेटेड इम्पैक्ट है स्पेशली ऑन विमेन, इट इज फेल्ट मोर इन द कंट्रीज और द लो इनकम कंट्रीज और द इमर्जिंग कंट्रीज। सो विमेन अक्रॉस द वर्ल्ड फेस सीवियर रिस्क टू देयर हेल्थ, सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाउएवर, women in developing and less developed countries, especially in low income areas, are more vulnerable to climate change because of their dependence on natural resources and labor intensive work for their livelihood, ठीक है। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ देयर इंडिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर इंटेंसिव वर्क,
ठीक है, इस वजह से जो विमेन की वल्नरेबिलिटी है स्पेशली इन द लो इनकम कंट्रीज वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। विमेन आर मोर लाइकली टू लिव इन पॉवर्टी देन मेन, which is just one of several social, economic and cultural variables that makes them more susceptible to the effects of climate change. तो पॉवर्टी के फ्रंट पे देखें तो भी वहां पे भी विमेन जो है वो they are more likely to live in poverty. ठीक है, ड्यू टू द क्लाइमेट क्राइसिस मोर टाइम एंड एफर्ट, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से क्या हो रहा है कि मोर टाइम एंड एफर्ट आर नीडेड टू ऑब्टेन बेसिक नेसेसिटीज, ठीक बात है। रूरल वुमेन शोल्डर द बर्डन ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन वाटर, एडेक्वेट कुकिंग फ्यूल एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर देयर फैमिलीज, ठीक बात है। दूर दराज से आप देखते हो राजस्थान में या और भी जो रीजन्स है हमारे कंट्री में, रूरल एरियाज में दूर दराज से पानी लाते हैं सर पे रख के, and even they get the this required material for, let us say, cooking and all, for example woods and cooking fuel. Women may be at increased risk for health and safety because they must travel long distances every day to collect water and fuel. So this is why climate change has a disproportionate effect on rural women. Women में भी disproportionate effect of climate change तो women पे है, but that too on rural women, not urban women. Okay, so women in low income countries, especially South Asia and Sub-Saharan Africa, engage in climate vulnerable occupations such as farming and other labor intensive work. So ILO के report के according over 60% of working women in Southern Asia and Sub-Saharan Africa are still in agriculture, where they are often underpaid and overworked. So ये issues हैं कि underpaid हैं but they work more, overwork, ठीक है। So despite being the backbone of the food production system, women own only about 10% of the land used for farming, ठीक है। देख सकते हो कि अराउंड 60% ऑफ women working women जो Southern Asia and Sub-Saharan Africa में है, they are still in agriculture, but how much land they own? Just 10%, remember. So gender specific issues. According to United Nations study, most 80% of those displaced by climate related disasters are women and girls. Women, especially those from vulnerable communities, face particular difficulties during and after natural disasters. When women are uprooted, they are more susceptible to prejudice and exploitation. ठीक बात है। For instance, यहाँ पे नेपाल के earthquake एग्जाम्पल देते हैं 2015 में जो हुआ था। The United Nations Population Fund (UNFPA) found women were more exposed to trafficking and exploitation post this Nepal earthquake in 2015. It means कि natural disasters के बाद भी prejudice and exploitation जो है वो rates जो है वो women के खिलाफ against ज़्यादा है, ठीक है, स्पेशली रूरल women की बात करें तो separation from social networks, a higher risk for gender-based violence, and decreased access to employment, education, and essential health services such as sexual and reproductive health care and psychosocial support are just some gender-specific issues women face. ठीक है, जैसा कि हमने बात किया कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ जो वीमेन है स्पेशली इन सब सहारन एंड दिस साउथ एशियन कंट्रीज, तो यहाँ पे क्या इशू है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट जो होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे हमें देखने को मिलेगा नेगेटिवली एंड सिग्निफिकेंटली। सो हीट स्ट्रेस अफेक्ट्स वर्कर्स अ लॉट इन दिस सेक्टर स्पेशली इन साउथ एशिया एंड अफ्रीका। Changing precipitation patterns and more frequent extreme weather events are just the beginning of the problems. Their effects can on crop production and food security fall disproportionately on these people who already face significant challenges in obtaining resources. ठीक है, so women engaged in agriculture do not have access to quality inputs, बिल्कुल ठीक बात है, and possess low education and technical knowledge. Thus, women farmers जो हैं they are disproportionately going to be impacted with the changing nature of let us say rainfall and all. Fine. Women laborers are vulnerable and seriously impacted. Various studies also reflect how flooding has increased water scarcity and also violence against the exploitation of women. Therefore, need of R is to invest in women's education and training. Because climate change is also linked to women's inequality. According to estimates, 130 million people could be pushed into poverty by 2050. 13 crore
due to climate change risk, natural disasters, and food inflation impacting women's inequality. When it comes to adjusting to a changing climate, women have a lot to offer. ठीक है? Investment in women's education, training, and access to resources are essential if we are to be resilient to the impact of climate change. तो अगर हमें resilient show करना है against climate change, so the need of R is to invest in women's education, training, and especially and access and made the resources accessible to them. ठीक है? तो ये सब चीजें हमें करनी होगी. Reduce the negative impacts of climate change on people's living standard by teaching them how to practice sustainable agriculture, water management, and energy separate generation. For example, in India, we have this model of SEWA, that is Self-Employed Women's Association. This is very, very important. You can use this anywhere. I mean, especially society and relating to women and all. So SEWA teaches women farmers how to respond to shifting climate patterns to support themselves better financially. Therefore, it is essential to support groups that educate the public, train people to adapt climate change, and invest in women's education and training in environmentally friendly farming method. ठीक है? सो इस तरह की सेवा जैसे जो भी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, और उनको प्रमोट करने की जरूरत है जो इस फील्ड में स्पेशली काम कर रही है. ठीक है? Women's participation in climate policy decision making at all levels is crucial for effective climate change mitigation and adaptation strategies. एक बात है, as well as getting decent employment. As women face greater risk in climate change, gender parity, equality in decision making bodies is essential. One such program in South Asia is the Gender and Climate Change Development Program, which aims to increase women's influence in policy making by providing them with a stronger voice. ठीक है? Globally, similar efforts are required for efficient climate change adaptation and mitigation. We can say that developing and emerging countries urgently need women-led climate action. एक बात है कि जो सेक्शन सबसे ज्यादा vulnerable है because of out of climate change, so इसलिए जरूरी है कि उसकी भी से उसमें जो भी decision making, policy making है उसमें होनी चाहिए. ठीक है? So that's I mean an insightful article. यहाँ से सेवा मॉडल जरूर आप यूज कर सकते हो कहीं आप जीएस के पेपर में, स्पेशली रिलेटेड सोसाइटी एंड विमेन. ठीक है? और विमेन इन एग्रीकल्चर. ओके, नेक्स्ट, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट. द आर्टिकल इज रिलेटेड टू आदित्य L1. आदित्य L1 Lagrange point 1, its functioning and purpose. So far monitoring the sun, the chief purpose of this is Aditya L1. Aditya means sun actually, हिंदी में आदित्य बोलते हैं. So therefore somewhat जो आदित्य L1 मिशन है that has been launched in order to monitor the sun, and काफी सारी चीजें हैं जिसके 7 पेलोड्स हैं. 2-3 बार इसके बारे में बात कर चुके हैं हम. So 7 payloads are there on the Aditya L1 on board. Fine. For different studies, like let us say mass coronal ejection के बारे में स्टडी करनी है, फिर जो डाइवर्जेंस आई मीन जो हीटिंग है कोरोनल हीटिंग है उसकी स्टडी करनी है, फिर सरफेस एंड ऑल. सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स हियर. ठीक है? अभी तक मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा है, बट इट विल टेक अराउंड 4 months इन ऑर्डर टू रीच द सन. एंड सबसे पहले लैग्रेंजियन पॉइंट 1 की बात करते हैं कि L1 इसका नाम ही है, आदित्य L1. So monitoring the sun, discovered by mathematician Joseph Louis Lagrange, L1 is one of the 5 points located approximately 1.5 million kilometers away, where the gravitational forces of the sun and the earth are in equilibrium. ठीक है? तो जहां पे अर्थ एंड सन की ग्रेविटेशनल फोर्सेस मिलती हैं at the distance of 1.5 kilometer, fine, 1.5 million kilometers. ठीक है? वहां पे आपकी जो है L1 है, आदित्य L1. L1 is Lagrangian point 1 actually out of the 5 such points. ठीक है? ये ध्यान रखना हमने. Okay. Hence, a spacecraft placed at L1 orbits the sun at the same rate as Earth and affords an uninterrupted view of the sun. So now we got the point कि क्यों आदित्य L1 के नाम में L1 है and Lagrangian point 1 पे ही क्यों फोकस किया गया? Why not L2? Why not L3? Why not L4 or L5? Because the reason is here that any spacecraft placed at L1 orbits the sun at the same
rate as Earth and affords an uninterrupted view of the sun. यही तो हमें करना है कि uninterrupted view हमें मिलती रहे, तभी स्टडी कर पाएंगे. Making it an ideal observation post for space-based solar observations. तो आपको किसी को ये लगता होगा कि L1 ही क्यों, तो उसका जवाब सीधा सा है ये. ठीक है. The L1 is currently home to European Space Agency, remember, and even NASA, SOHO, that is Solar and Heliospheric Observatory, observing the sun and its dynamics. Aditya L1 will join this observatory to unravel the mysteries of the dynamics of the sun. ठीक है. तो ESA ऑलरेडी वहां पे प्लेस्ड है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की. Then NASA is there, then SOHO is there, and L1 will be joining these observatories only. September 2nd को लॉन्च किया था हमने ये मिशन. The craft will undergo 5 orbit raising maneuvers before being slingshot to the L1 point. ठीक है. मैन्यूवर्स कल भी मैंने बताया था टेक्निकल लैंग्वेज में कि मैन्यूवर जो है वो क्या है, वी कॉल इट मैन्यूवरिंग मींस अर्थ प्रोपल्शन सिस्टम को यूज करके आप जो सैटेलाइट की ऑर्बिट को चेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड मैन्यूवरिंग. सो 5 टाइम्स ऑर्बिट चेंज होगी इस पूरे मिशन में, रिमेंबर. सो 5 ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर्स विल बी परफॉर्म बाय द इसरो. द शिप विल कोस्ट फॉर अबाउट 4 months बिफोर इट रीचेस L1. तो 4 महीने तक लग जाएंगे. At that stage, the thrusters will be fired to make the craft circle around the L1, placing it in what is known as halo orbit around L1. ठीक है. तो किस ऑर्बिट में हम प्लेस करने वाले हैं आदित्य L1 को? Remember, halo orbit. Halo. From this vantage point, Aditya L1 can observe the sun 24/7 using its 4 remote sensing payloads and measure in situ the various parameters of a space weather. ठीक है. So that's the importance of this mission. Next purpose जो है to understand the climate variability. So like a heartbeat, solar activity is measured in terms of the number of sunspots. Sunspots क्या है? The cooler regions on the sun surface which increase and decrease in a cycle of 11 years. ठीक है. So जो भी आप sun spots या धब्बे देखने को मिलते हैं sun पे, that is because of those areas actually reflect that this indicates that these areas are the cooler regions of the sun. ठीक है. Temperature wise. When the sun is active, the number of sunspots is in the hundreds, and at a solar minimum, the numbers are nearly zero. However, ठीक है. So ये हमारी मिशन की जो फोकस है, जो की स्टडी करेंगे हम सनस्पॉट्स एंड उसके बारे में. उसके बाद the Earth's upper atmosphere absorbs most of the solar UV rays. Undoubtedly, the absorbed energy affects the atmosphere composition and temperature and other parameters. It is imperative to know how far variation in the UV rays emitted by the sun contributes to climate variability on Earth. So एक ये भी पर्पस है कि climate variability वो हम किस तरह से स्टडी कर पाएंगे, with the use of एक तो sunspots की and दूसरी UV rays जो sun रेडिएट करता है उसकी भी स्टडी करके. So the Solar Ultraviolet Imaging Telescope suite developed by the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics. ठीक है. So suite is another, you can say, a fine. So suit will be used to absorb the UV radiation from different zones of the solar atmosphere. उसके बाद एक और पेलोड है, that is the on-board intelligence system will detect any sudden appearance of bright spots such as solar flares. Solar flares क्या है? A sudden burst of high energy visible lights. So solar flares are basically the high energy visible lights that suddenly burst. UV rays, X-rays and gamma rays, all of these would be analyzed. ठीक है. उसके बाद और भी पेलोड्स हैं, मैंने कहा था 7 हैं. सो कंबाइनिंग द डेटा फ्रॉम द सोलार लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स एंड द हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर. ठीक है. डेवलप्ड बाय द इसरो बेस्ड UR सैटेलाइट सेंटर विद सूट. सो ऑल 3 वुड बी कंबाइंड एंड फिर उनकी कंबाइन करके जो भी फाइंडिंग्स है उनकी स्टडी की जाएगी. ठीक है. So all of these can help us gain insight into the emergence, progression and energetics of transient events on the surface of the sun in the UV region. Okay. So observing the sun using the suit will enable us to better understand climate variation on Earth. So this is one of the applications of the suit payload. Earth's climate has definitely changed. Global warming is real.
The data from suit and other papers of Aditya L1 will help us resolve the contribution of natural and anthropogenic factors driving climate change. So this would be again an important contribution of our mission. उसके बाद looking deeper. So और भी हमारे जो purposes हैं इस mission के वो ये कि at times the sun sneezes like a tongue of fire, a chunk of the corona suddenly accelerates and leaps into interplanetary space called coronal mass ejection. ठीक है कि सन के थ्रू, कोरोना के थ्रू स्पेशली मास, वास्ट अमाउंट ऑफ इजेक्शन और रिलीज करते हैं, स्पेशली द गैसेस इन प्लाज्मा, वी कॉल इट CME, कोरोनल मास इजेक्शन. So this cloud consists of billion tons of energetic plasma mixed with solar magnetic field is hurled at this kilometer per second. उसमें जाने की जरूरत नहीं है. Usually the corona is not visible in the glare of the radiant sun except during the brief moment of total solar eclipse. So ये point याद रखना कि usually corona is not visible. ठीक है, visible, it is visible during for a brief moment, that too for a brief moment during the time of total solar eclipse. ठीक है. सो अगेन इसका भी हमें कोरोनल मास इंजेक्शन के पीछे की रीजन क्या है इसका भी फाइंड आउट, इसको भी फाइंड आउट करना है. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव अनदर दिस payload on board, that is visible emission line coronagraph developed by the Bengaluru based Indian Institute of Astrophysics in close collaboration with the ISRO, can peak as close. So a region never imaged by any solar telescope. So इसकी भी स्टडी करेगा सोलर रेडियाई की, that is as close as 1.5, 1.05 in fact. तो इससे क्या फायदा होगा, यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ VELC को यूज करके, so we can get crucial information about the mechanism responsible for coronal mass ejection. So when a solar storm brews, अब सोलर स्टॉर्म की बात कर रहे हैं, सोलर फ्लेयर्स की बात ऑलरेडी कर चुके हैं. सो अलोंग विद सनलाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज अल्ट्रावायलेट रेज, द सन emits a constant stream of charged particles and mixture of solar magnetic fields that travel throughout the interplanetary space called solar wind. So solar wind क्या है? Solar wind is nothing but a stream of charged particles mixed with the sun or the solar magnetic fields. ठीक है, we call it simply the solar wind. So stream of charged particles. तो इसका भी पता लगाना है हमें, so इसकी भी स्टडी करेंगे. साथ में energetic particles from the solar wind sneak through the weak magnetic regions of the earth, the north and south poles, and interact with the molecules in the atmosphere, creating the dazzling display of aurora phenomena देखते हैं हम. तो इसके पीछे का भी लॉजिक रीजंस हमें मिल सकते हैं इस मिशन से. Violent eruptions like solar flares and CMEs trigger a strong wind or solar storms. So these are the two factors which are actually responsible for ejection of streams of you can say the charged particles. The two factors जो responsible हैं, that is solar flares and CME, that is coronal mass ejections, that is in the form of CME in the form of plasma and gases generally होते हैं. ठीक है. So geomagnetic storm occurs when the solar storm bashes the earth मैग्नेटोस्फीयर. सो अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर को जब ये बैश आउट कर देता है, तो अगेन वी सी द फिनोमिना ऑफ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, दैट इज जियो मींस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. सो वी कॉल्ड इट दिस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स अकरिंग. ठीक है. तो GPS and shortwave communications are disrupted during this aurora phenomena actually. और जियोमैग्नेटिक दिस स्पेशली मैग्नेटोस्फीयर जब आपकी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जब अकर होती है, तो अल्टीमेटली द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड ऑल GPS even gets impacted. ठीक है. And the energy from the charged particles hits the upper atmosphere, increasing the density and causing extra drag on satellites in the low Earth orbit. Lower orbit that extends up to 1,000 kilometers from the surface of Earth. Vertically. So the change in the solar winds density, speed and direction is called space weather. ठीक है. तो इस मिशन का पर्पस ये भी है कि स्पेस वेदर की स्टडी की जाए. फाइन. एंड स्पेस वेदर क्या होता है? दैट इज चेंजेस इन द सोलर विंड्स डेंसिटी, स्पीड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द स्पेस वेदर. तो तीन चीजें याद रखनी है, विंड्स की डेंसिटी, स्पीड एंड डायरेक्शन. सोलर स्टॉर्म्स रिजल्ट इन इनक्लीमेंट स्पेस वेदर. Aditya L1 will function as a space weather station. ठीक है. The Aditya solar wind particle experiment, another
एस्पेक्ट्स डेवलप्ड बाय इसरो, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे एक पापा भी है, दैट इज प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। सो दीज आर ऑल इन दिस ऑन बोर्ड दिस 7 पेलोड्स, ठीक है, उसी में से ये नेम्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाए गए हैं, डिफरेंट स्टडीज करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद so you can see this electro optic system, this you know advanced tri-axial high resolution digital magnetometers going to keep a constant watch over the parameters of space weather near Aditya L1. So using the data from these instruments, scientists can predict probable geomagnetic storms and better understand space weather dynamics. So again इस यहाँ पे भी हमें इसका फायदा देखने को मिल सकता है, एडवांटेजेस कुछ देखने को मिल सकते हैं। So near Earth environment is filled with hundreds of satellites and the change in the space weather can affect them directly. बिल्कुल ठीक बात है। The trajectory can be deflected by impact of solar storm on upper atmosphere. ISRO alone has 50,000 crore worth of space assets. Understanding space weather is an international issue and the data from Aditya L1 will aid in making the models and predicting storms in advance. So this is another purpose or usefulness of our mission Aditya L1. The maiden mission by India, ठीक है, so again important. Now this is important in the sense understanding Lysite, the French principle of secularism. So what exactly this Lysite means in French principles of secularism? Remember 3 years back, 3-4 years back I think, yes, UPSC asked a question in GS paper 2, of course this is from polity section. So there UPSC asked a question that compare and contrast the concept of secularism between India and France. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस की जो सेकुलरिज्म है कहीं ना कहीं वो उस टाइम पे भी न्यूज में थी रिलेटेड टू दिस फ्रेंच सेकुलरिज्म, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे आप सोच सकते हो कि हाँ ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। जैसे चार्ली हेब्डो जो एक मैगजीन एक्चुअली जर्नलिस्ट जो इसके थे, शूटिंग ऑफ जर्नलिस्ट एट चार्ली हेब्डो हेडक्वार्टर ऑफ दैट मैगजीन एक्चुअली which wrote that time something about the Islamic State or especially the terrorists. So you can see कि किस तरह से वहाँ पे अटैक्स हुए उसके बाद। तो हमारे लिए समझना ये जरूरी है ये कॉन्सेप्ट है क्या, बाकी तो सब फैक्ट्स फिगर्स हैं, दैट इज ऑफ कोर्स can quote them, but what is more important for us to understand is what exactly is the meaning of French this secularism. So the meaning of laicite, that is based on the principle of French secularism, it was coined in the 19th century, and laicite is a complicated and politically charged term. It is understood as a formal separation of state and church. Remember, सबसे बड़ा जो one of the biggest difference जो हमें नजर आती है between this French secularism or Indian secularism, that is complete separation है in France or the Western nations between formal separation between the state and the church. It means between the state, that is country or the government, and the church. But India में complete separation नहीं है, reasonable separation है, remember. And government whenever the need arises can intervene even in the religious matters. ठीक है, for example secularism, especially धर्म के नाम पे दंगे फसाद होने लग गए, तो of course government needs to intervene. It involves the complete removal of religious values from the public sphere and their replacement with secular values such as liberty, equality and fraternity. French Revolution 1789 वहाँ से 3 इवन कि हमारे भी preamble में ये mentioned as words liberty, equality, somewhat and fraternity. So the underlying goal of laicite is to implant a tolerance and assimilate people. As per the principle, religion is to be confined to the private sphere. ठीक बात है? It is important to note here that the state plays an important role in ensuring that affairs are run according to the principle of French secularism, that is laicite. So laicite क्या है? Is the product of the struggle of anti-clerical republicans against the power of the Catholic Church. Was an abstract idea following the French Revolution in 1789. ठीक है? It took a concrete shape in the form of the law of 1905 in the Third Republic when state-run secular schools were established. The law of 1905 guarantees freedom of conscience
and freedom of worship except when it clashes with the public order. तो क्लियर कट मेंशन है, देख रहे हो कि आपके पास फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, but that is valid only when it doesn't clash with the public order. ठीक है, it says that the republic would neither pay for nor subsidize any form of worship. Today, while there are publicly funded Catholic schools in France, most children attend public schools which are secular spaces and free of cost. तो सी कि वहाँ के बच्चे मोस्टली पब्लिक स्कूल्स जाते हैं, अटेंड करते हैं, और हमारे यहाँ प्राइवेट का ट्रेंड चल रहा है. ठीक है, सो यू सी द डिफरेंसेस. So very very important I would say, especially क्योंकि you never know, UPSC can ask to compare this French secularism concept with the Indian secularism, so need to keep tap on this. Next, IF Indian Air Force begins Western Air Command's annual exercise. ठीक है, so इस चीज का ध्यान रखना है. The operations from September 4 to 14 will see activation of all frontline assets and force multipliers of the Air Force from the LOC to the LAC. ठीक है, तो जरूरी है. LAC पे आपको पता ही है क्या चल रहा है. Macron to raise risk of partitioning of the world at G20 meet. बिल्कुल ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टीशनिंग तो हमें देखने को मिल ही रहा है. फिर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, वेयर फ्रेंच हिस्टोरिक प्रेजेंस गोज बैक टू द कॉलोनियल एरा, फ्रेंच रियूनियन आइलैंड एंड ऑल. So of course leaders will when they will be joining the G20 summits, of course they will raise issues of international importance, let us say, or of their national importance. Of course, giving tap on that, whatever coming out of the Delhi declaration post G20 summit, we will be discussing that in detail. ठीक है, तो पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे, इसको करने की जरूरत नहीं है हमें. ओके हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट. विक्रम लैंडर डज अ हॉप. हॉप क्या होता है? जंपिंग ऑन अ सिंगल on a one leg, you can say. Goes to sleep. Good night till September 22. Yes, now finally dawn to dusk actually. So dusk वाला time start हो गया है. Fine. On the surface of this, जहाँ पे हमारा ये लैंडर उतरा था विक्रम, so कहीं ना कहीं जो साउथ पोल ऑफ दिस मून है वहाँ पे now we see more of what? Dark time. So of course इस वजह से इसरो ने इसको शट डाउन कर दिया है फॉर द टाइम टिल सितंबर 22 सो इसरो होप्स टू वेक अप लैंडर एंड रोवर व्हेन लूनार डे डॉन्स अगेन. ठीक है, जब दोबारा से सनशाइन होगी इस सरफेस पे तो एक रीएक्टिवेट किया जाएगा. विक्रम एलिवेटेड इटसेल्फ बाय अबाउट 40 सेंटीमीटर एंड लैंडेड 30 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर अवे. ठीक है, तो इसी को होप बोला गया है. The HOP experiment has significant bearing on future missions to bring back samples and human flight. क्योंकि लैंडर हमारा हॉप मतलब जंप करने में एंड जहां पे हम इसरो चाहता था वहां पे लैंड करने में सक्सेसफुल रहा है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर में सैंपल्स लाने के लिए मून से सरफेस पे एंड ह्यूमन फ्लाइट के लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉमिसिंग स्टेप है. ठीक है, सो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स कुछ hours before, the ISRO said Vikram had achieved another significant milestone as it successfully undertook a HOP experiment, elevating itself about 40 centimeter as expected and landing safely at a distance of 30 centimeter to 40 centimeter. So this kick start enthuses future sample returns and human missions. It's a good thing. चलो बाकी सब हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं इससे रिलेटेड, so no use to go back same thing again and again. Telecom forms civil society groups divided over selective ban on apps. Okay. So basically ये उससे रिलेटेड है जैसे कई वायलेंस हमें देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल selective app banning such as switching off WhatsApp in a strife torn area as an alternative to internet shutdowns. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि क्योंकि डॉट ने ये कहा था कि जैसे इंटरनेट शटडाउन कर देते हैं, जैसे मणिपुर में भी हम देख रहे थे 3-4 महीने से बंद, तो उसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ इंटरनेट शटडाउन, इशू क्या है? इशू ये है कि इंटरनेट तो चल रहा है बट अल्टीमेटली जो आप फॉरवर्ड कर रहे हो मैसेजेस व्हिच आर एक्टिंग एज अ फ्यूल टू एडिंग फ्यूल टू फायर, तो वो हो रहा है किसकी वजह से? बेसिकली
व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग की वजह से, तो क्यों ना व्हाट्सएप को उस टाइम के लिए शट डाउन कर दिया जाए इंस्टेड ऑफ इंटरनेट शट डाउन। ठीक है, सो सिलेक्टिव बैनिंग जो अप्रोच है डॉट का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसको टेलीकॉम फॉर्म्स एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने आई मीन दे हैव डिवाइडेड ओपिनियन, नॉट ऑल इन फेवर, नॉट ऑल अगेंस्ट। ओके, सो ग्रेन डील की बात हो रही थी दोबारा से। जो प्रेसिडेंट हैं टर्की के एर्डोगन साहब, वो दोबारा से गए हैं पुतिन जी से मिले हैं। सो ब्लैक सी ग्रेन डील करके एक अब फिलहाल रशिया ने इसको, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो इसको सस्पेंड कर दिया है। एंड सी नो डील अंटिल वेस्ट मीट्स मॉस्को डिमांड्स। ठीक है, क्लियर कट कह दिया है। लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया ट्रिप, डिसअपॉइंटेड शी इज नॉट अटेंडिंग G20 मीट सेट बाय बिडेन, यूएस प्रेसिडेंट। Okay, CBDC can make payments across borders efficient. Even across borders भी international payment भी हो सकती है। So faster and cheaper cross-border payment services would deliver widespread benefits to people, said by RBI governor. Vouching for CBDC. With its instant settlement feature, CBDC can make cross-border payments more secure. Using local currencies in cross-border payments can shield emerging market currencies from global shocks. ठीक बात है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की हम इंस्टेड ऑफ डॉलर्स हम रूपी की यूज करें क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए। एंड द अडॉप्शन ऑफ एन इंटरऑपरेबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कैन बेनिफिट द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इकोसिस्टम। ठीक है, interoperability between the different countries or border countries can also help in overcoming the cross border, or can be advantageous to cross border payment ecosystem. This is what said by Honorable Governor of RBI. India may add 7 lakh gig jobs by November. Team Lease. तो टीम लीज ने ये कहा इंडियाज ई कॉमर्स रिटेल एंड ऑल में जो अराउंड 7 लाख गिग जॉब्स ऐड हो सकती है बाय नवंबर। बट यू नो दीज आर नॉट द परमानेंट जॉब्स, सो okay, what else? Finally, we have landed on the sports page, and from here you can see that nothing that important. Okay, so that's it from the today's Hindu analysis. Let us quickly have a look at the today's questions based on the analysis itself. So first question is CBDC. Central board digital currencies are a digital form of paper currency. Second statement, it is the same as fiat currency and exchangeable one-to-one with the fiat currency. You need to choose the correct option. And second question is Aditya L1 will function as a space weather station. Understanding space weather is an international issue, and the data from the spacecraft will aid in making models and predicting storms in advance. You need to comment for 15 marker into 50 words. So that's it from my side for the day. If you have any query, anything, you could put the same in the comment section. Until then, take care, keep revising, and stay tuned for tomorrow's Hindu analysis. Thank you.